Hi everyone, welcome to StudyIQ YouTube stations and आज YouTube session रे हम देखिबा MCQ that is related to हमें देखिबा climatology. तो last class रे हम देखिथिले MCQ related to the geomorphology and in this session we will go through the MCQ are related to the what climatology. And this climatology questions, it will have all the variety of questions starting from the wind to I will say atmosphere to basic questions to आरंभ करी जेते अछि हमर लोकल विंड हेकला जेट स्ट्रीम हेकला मानसून हेकला प्रेशर बेल्ट हेकला क्लाउड्स हेकला तो जहाँ अछि हमें पूरा डिटेल्स रे मतलब बहुत वैरायटी ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं कि आसी क्लाइमेटोलॉजी पई which will be helpful रहइबो तुम मन को पे डिफरेंट वैरायटी रहबो जेमति कि हमें लास्ट डे रे करथले जोटा कि जियोमॉर्फोलॉजी को नहीं कि हमें करथले राइट एक मिनट सो दैट वुड बी लाइक दैट तो सही भाई ही रहिबो सेशन चलो फिर तो सेशन को स्टार्ट करिबा में ओके सो आई एम आल्सो मॉनिटरिंग योर कमेंट तुम को जो कमेंट अछि ताको मॉनिटर करूची बिल्कुल 100% मॉनिटर होउची सो लेट्स सी so the session will be taken by me SIBASANKAR has with you climatology. So the fast questions before you, the fast questions before you. The fast questions in the screen, right? Yes. Which of the following condition is least favorable for the formation of tropical cycle? Least favorable, that means the condition is not wanted, right? There would be some wanted condition for the formation of the tropical cyclones and some would be unwanted. So which of the following is unwanted condition for the tropical cyclone? Yes, Satru has gone for the B, that is the high vertical wind shears. Anyone else tried बहुत बढ़िया questions रही and this is conceptually build up करिवो. The conceptually clarity asibo. Now what would be the question? See, the sea surface temperature above 27 is required condition. This is what required condition which is required for the formation of the tropical cyclones in the both hemisphere. The presence of Coriolis force, as we also know, this is also very the most prerequisite condition for the formation of the tropical cyclones. That is why if there would be no Coriolis force, there would be no tropical cyclones forms, would not be forms between the what 0 to 4 both the hemispheres of the equator. Then high humidity in the mid tropopause, this is also required for the formation of what upper air diversion system and the teleconnection. So but the high vertical wind surface, which is not a what unwanted thing, this is not, because we need low vertical wind shear force, we need what low, so this high is wrong, so low is the correct answer. So answer would be what B. So that is high vertical wind shear force that will disrupt the tropical cyclones. But exactly what will happen if it would be high vertical wind shear force, there would be no strengthening, there would be no maturity of the tropical cyclone, it would be converted into deep depression or simple is small low pressure, then that would be finished. Correct everyone? Fine. Samaste comment kari paribo. Everyone, you should comment it. जोठी न ही परिबो obviously मतलब some mistakes will be there, but we will, so that is why I have discussed this 4 points. So I will move to the next one. Which of the following statements about El Nino is incorrect? Okay, try it. Is incorrect. Try it. The first statement is there. It leads to warm ocean temperature of the west coast of South America. That is what it leads to warm ocean temperature. Is not correct, se koichi, not correct. Okay. Then it strengthens the Walker circulation, right? It weakens the trade winds over the equatorial Pacific region. It can cause drought in Australia and Indonesia.
Now which of the following is not correct? So answer is given by Satru is given to B. Rest बाकी समझते ट्राई करो. डिफिकल्ट लगुचे कि क्वेश्चंस बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं. ओनली यू नीड टू हैव द व्हाट conceptual clarity is required, otherwise questions are off to the level. Questions are, I would say, basic questions. If somebody has gone through El Nino, La Nina detail re jodi padhicho na, then you can do it, then you could what, you can do it. So jodi ame dekhiba, so here what will happens, right? So ethi jodi ame dekhiba, so obviously just a minute. Yes, only clarity is needed. Yes, the answer कौन हबो? Answer मुझे देखा strengthen water circulation. प्रथम कथा से कुछ not correct. That means it's what? It leads to the warm ocean temperature of coast of South America. This is correct. South America जो coast रे warm water रहिबो. El Nino तो सही ही हुई ना. El Nino means what? Simple warm oceanic current. Peru, Chile coast रे जिदे warm ocean current देखा होची, that is the El Nino. If it is cold current, then that would be La Nina. So that one is correct. So कही जी किया? Incorrect. Then second, it strengthen the water circulation. No, it will weakens the water circulation. It will what? Weakens the water circulation. Water circulation is what? Simple the atmospheric circulation of the Pacific Ocean. That atmospheric circulation will have positive phase water circulation, or the normal phase of water circulation, and the negative phase, or I would say that is the reversal pattern of water circulation, or that is we will also call this Southern Ocean oscillation, positive phase, normal phase, and the abnormal or the negative phase. So that is the answer. This would be the answer. This would be weekends, and these things are correct. These things are correct. So that would be answer is B, rightly pointed out. Yes, that will be there. And the next questions. So we will comes to the next one. Next question, Kwasiva. Next question, Kwasiva. Okay, next. Here is the next questions for you. है ना? Okay, fine. चलो फिर next question Kwasiva. Which of the following best explain the role of aerosol in the climate regulation? Aerosol in the climate regulation. Option 1, they are always increase the surface temperatures by observing the long radiations. अच्छा से कोई चीज बेस्ट एक्सप्लेनेशन. अच्छा देखो एरोजल साधारणतः लॉन्ग जो आम कह टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को से कैप्चर करती नहीं. ग्रीन हाउस गैसेस ऑब्जर्व करे. They reflect incoming solar radiations by causing cooling. Yeah, this is correct. They only they act as a greenhouse gas. No, they don't act. As I said, they would not act. They only affect the weather, not climate. No, they will affect both, right? So that is how. So this would be is the best explanation. What aerosols are? What simple the fine particles, dust. They are what? Without aerosol, there would be no formation of precipitation. Like the rain. Therefore, the rain formation we need what? That microscopic what? That hygroscopic. That we will call it what? Hygroscopic nuclei. That hygroscopic nuclei will comes from also the aerosols. They are also the fine aerosols which is required for the formation of the raindrop.
as they will provide the platform. That is why, so it would be the best explanation will be that they reflect incoming solar radiations and will little bit of cooling will be there, but they are not act as a greenhouse gases. So answer is given by B, majority of you, right? So that would be right answer. Next we will come, so here is the B. The aerosols can reflect incoming solar radiation, direct effect leading to the surface cooling. This is the good one. As I said, aerosol is very important for the what? For the climates of a particular region. कारण ये एथी पाई दरकार what? This is required. काहे की required मु कहली ना, this one is required एथी पाई एइथिपाई दरकार ताकि कहली मु जोटा हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्ली, इट एक्ट्स एज ए व्हाट? हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्ली, एंड दैट इज व्हाई दिस इज रिक्वायर्ड. That is why this is required. चलो फिर, okay, so question number 3 is done. Now comes to the 4, again El Nino, La Nina. I will have diversified questions, only you have to attempt. Okay, try करो. During the strong La Nina condition, which of the following pattern is typically observed? Whether there would be weakening of the trade wind, whether there would be suppression of the Indian monsoonal rainfall or the suppression of the Indian monsoon rainfall, strengthening of the Walker cycle, warm anomalies lies in the eastern Pacific Ocean. ये जदि आमे देखिबो, मु कहितली La Nina means what? पेरू चिली कोस्ट रे कोल्ड वाटर हेबो, तो एठी वार्म लिखा है, देन दैट वुड बी रॉन्ग. मु कहितली जेतरे एलिनो टाइम रे हम डिस्कस करथला पूर्व क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन हम डिस्कस करथला कि एलिनो टाइम रे वीकेंड हुए, La Nina टाइम रे नो, तो ये भी गलत है गला. एलिनो हेले मानसून खराब हुए, मानसून राइट, बट La Nina हेले तो भलो हबो, दैट मींस ये भी खराब, ये भी गलत. So only this statement is correct. Only this statement is correct. So statement C is correct. So what? Statement C is correct. So that would be what? Statement C is the correct. Obviously little bit of tough rival, but this is generally, as I mentioned from the beginning of this session, if somebody is having gone through this now, clarity ochi, then you can do it. So C is the answer. As I said, associated with the stronger trade winds, that will be strengthened Walker circulation, but this is गलत, ये गलत, पहले से ही उसको हमने देख लिया और डिटेल डिस्कशन हो ही गया. चले फिर, चलो नेक्स्ट, Modoki. What is ENSO Modoki? Modoki means what? There would be Elida Modoki, there would be La Nina Modoki. Okay, go through this one. This one is also important one. Okay, comment करो बाकी मैंने comment it. Pipe number C, a combination of El Nino and Indian Ocean dipole. Okay, let me. So which of the following best description of the term Modoki? See, when we say Modoki means what? Simple, it's a variant of that, I would say Southern Ocean oscillation, or better to say that coupling condition of that there. Modoki means what? Middle of Pacific Ocean will be what? If it is El Nino, then it would be warm, right? It would be El Nino, so that means it would be Central Pacific Ocean will be warming off, and the both side will be cooling down. And the both side will be cooling down. So that is why, so B will be the answer. So that is why, so El Nino Modoki means in the Central Pacific Ocean. What? In the Central Pacific Ocean, there would be low pressure. But when it comes to El Nino, let's say आप पूर्व क्वेश्चन में La Nina देखिथिले, ता पूर्व El Nino देखिछे, then एबे देखिले El Nino Modoki देखिले.
जेतरे एलिनो होची low pressure would be what, that means हमें कहबा eastern Pacific Ocean. When that is La Nina condition, the low pressure would be on the western Pacific Ocean, but when there would be Modoki, it would be the central Pacific Ocean. The low pressure would be in the central Pacific Ocean. Now is fine. Good evening Pihu. So it would be what, B. The answer is what, B. Now comes to the 6th number question again. How does La Nina typically affect the hurricane activities in the Atlantic Ocean? Try it. Yes, right. Whether it will reduce the hurricane frequency due to the stable atmospheric condition, whether it will has no significant impact, or it will increase, or leads to the forming more Pacific, not on the Atlantic. If this is La Nina condition, I mean what will happen is the eastern Pacific region will have what? Yes, it's a D. Answer is what, that would be. Okay, let's see what would be answer. My point is that if Atlantic Ocean, let's say if this is La Nina condition, that means Indonesia, Australia, all this region will have low pressure, and the eastern Pacific region will have high pressure. If eastern Pacific will have high pressure, then how eastern Pacific will have more tropical cyclones or hurricanes? That would not be there. Getting my point? That would not be there. Now whether it would have no significant impact, no, it will have impact. Either it would be A or C. Now which would be the answer? You have to pick. PU is going for the D. Yes, it would be what? It would be, as I said, it would be what? It would not be D, as I mentioned, it would not be D, because as I said कि ये हबनी एथिपे कहली बा तुमको मु कहली ना काना जेते बेले तमरो ला नीना कंडीशन अछि ताले ईस्ट पैसिफिक ओशन रे कोन हबो कोल्ड वाटर ताले तो हबार नहीं, तो डी ऑटोमेटिक कैंसिल हे गेला. किंतु अटलांटिक ओशन रे गोटे सर्कुलेशन स्टार्ट हबो, तो ये हरिकेन एक्टिविटी इज रिड्यूसिंग बाय द wind shear force, तो एठी रिड्यूस करिवो reducing by the what, that means the increases in the hurricane. कारण अटलांटिक ओशन रो सर्कुलेशन टा अलगा रहिबो. तो मु जदी आपको देखैबी, आपको केमती देखैबी, एक मिनिट मु आपको टिके देखौछि, एक मिनिट मु एटा टिके बुझेई दउछि. जो मन को टिके डाउट अछि एटा मु टिके बुझेई दउछि तम मन को, हैला एटा टिके बुझेई दउछि. जो मन को डाउट अछि टिके एटा बुझेई दउछि. देखो, here is your South America, here is your Australia. In the La Nina condition, what will happens that this region will have low pressure. In the La Nina condition, this region will have low pressure, and the region will have high pressure. The region will have high pressure. Now, if this is low pressure, so there is high pressure, that means the East Pacific Ocean, so there would be 80,000 formation habani, so hurricane is not going to be there. So automatically option D got cancel, this got cancel. तो रहिला तमर A and C. Now A and C रहिला. एबे जदि A and C को हमें देखिबा, टिके ध्यान से देखिबो. This is your Atlantic Ocean and here would be your Africa. तो एठी हमें देखिबा Africa रहिछि, here is India. Now एठी गोटे circulation already atmospheric circulation हम कहिबा. The circulation will be like this. The circulation will be like this. This is what? This would be the circulation of the air circulation. But एठी जो air circulation रहिबो, जदि हमें देखिबा, that means एपोटे जदि तमरो low pressure रहिछि, तो this region will have the high pressure, and here would be low pressure. Now if this is low pressure, this is high pressure, here would be low pressure as well. That means Atlantic Ocean रो जो western side will have high pressure. काहे कि को एक कथा मु कहितली बेसिक क्लास रे के जदि हमें कहिबा if सेठी गोटे जदि मझिरे अछि low pressure, ताले both side will have high pressure.
So both sides will have high pressure. This would be the combination. But jedi ethi low pressure is, this is high pressure. But if this would be high pressure, it would be low pressure and low pressure. If low pressure Atlantic Ocean, so there would be more formation of what? Hurricanes, and that is why the answer would be like this. That is why the answer would be like this. Is it clear now? Is it clear everyone? एबे तो क्लियर ही जीवो ना, एबे क्लियर ही जीवो. चलो फिर नेक्स्ट, which of the following is correct? Vertical position of the jet stream. बहुत इजी क्वेश्चंस देखि दियो, ट्राई कर देखो, बहुत इजी क्वेश्चन दिया है. राइट, Anubhav is there. Good evening. So try it. This one is basic question I have given, because prior to this there was some tough question, but this one is pretty easy one. Try करो देखो. चलो फिर देखो ऑप्शन कौन देछि. वर्टिकल पोजीशन कहिछि, से कहूछि कि which of the following is the correct, the vertical position of the jet stream कोठी रहइबो. भाई ट्रोपोस्फियर रहइबो, ट्रोपोपोज रे रहइबो ना, स्ट्राटोस्फियर रहइबो ना, स्ट्राटोपोज रहइबो ना, मेजोस्फियर रहइबो ना, मेजोपोज रहइबो. हां, अरे कोन हे गेला, कोन आला आंसर दो नै जे. इट वुड बी ट्रोपोपोज पाखरे देखा जबो, ट्रोपोस्फियर रो एंड रे देखा जबो. व्हाट? इट वुड बी ट्रोपोपोज एंड रे देखा जबो. कारण जेट स्ट्रीम रो जदी त माने जानि छ कि जेट स्ट्रीम रो हाइट मैक्सिमम के थबो 12 किलोमीटर, दैट मींस 6 to 12 किलोमीटर वेरीज करे. The height of the jet stream that varies what? 6 to 12 kilometer. जो jet stream रही, the height will varies what? 6 to 12 kilometer vary करिवो. And the 12 kilometer would be what? 6 kilometer at the pole and 12 kilometer in the, I would say what? Equator and the subtropicals in the tropic region. Or I would say particularly it would be in the tropical region. It would be in the pole. What? That is the what? Jet stream रखाइबा. तो जेट स्ट्रीम तो इक्वेटर पाखरे देखा जीवनी, तो जेट स्ट्रीम सेति पे हमें ताकू कोन कहिबा. अदरवाइज तो ये 18 किलोमीटर 17 किलोमीटर ही थांता. तो साधारणतः तमर जो जेट स्ट्रीम रही छी दैट वुड बी 6 to 12 किलोमीटर अल्टीट्यूड रे देखा जीवो. ताल जेट स्ट्रीम कोते देखा जीवो, दैट मींस लेट्स से इट वुड बी 20 डिग्री टू नै की पोल भीतर देखा जीवो, इक्वेटर आड़ को जिबार नहीं. सो इट वुड बी व्हाट? 20 मैक्सिमम बा ओस्ट केस रे आई वुड से, बट 20 भी जीवो नहीं. इट वुड बी 23 and half. So better to say what? 23 and half and pole भीतर देखा जीवो तमरो जेट स्ट्रीम. तेरो हाइट केते रहबो 6 to 12 और 6 to 12 जदी होउची, that means it would be what? B will be the answer. कौन लिखिछ मु टिके देखे कमेंट कौन लिखिछ. बट सर ट्रोपोपोज इज बुझ पाइले इनटे कौन लिखिछ. अच्छा ठीक अछि. Next questions. The Tibetan Plateau plays a significant role in the behavior of jet streams during the summer. The Tibetan Plateau plays a significant role in the behavior of which jet stream? अच्छा अच्छा, which jet stream? चलो देखो यार भी आंसर कह देबे फटाफट. चलो फिर देखो 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 राइट. देखो जेट स्ट्रीम गोटे अच्छी पोलार जेट स्ट्रीम, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, तमरो पोलार जेट स्ट्रीम, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, पोलार नाइट जेट स्ट्रीम, सोमालियल जेट स्ट्रीम. सो देयर आर 5 जेट स्ट्रीम्स आर देयर, राइट. हाँ, मु तो कहिनी ट्रोपोपोज इज ए काम एरिया हियर. ट्रोपोपोज इज ए काम एरिया किए कहला तुमको, मतलब जो कमेंट देइछो मते कि मु देखु छी कि ट्रोपोपोज इज ए काम एरिया. मु तो केबे कहनी कि ट्रोपोपोज गोटे काम एरिया बोल के देयर कुड बी इनस्टेबिलिटी, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी हेई पारे. तो मु तो केबे कहनी तुमको
कि दैट इज द मु कहनी कथा राइट ठीक अच्छे सो इट वुड बी व्हाट whether it would be soft tropical jet stream no why not soft tropical jet stream kana ye asute हमर किसी relation नहीं polar jet stream no it's a arctic मतलब jet stream no it's a what answer would be tropical easterly jet stream which is very important for the formation of monsoon तो तमरो ध्यान से सुनिबो जदी तुमको पचारो which of the jet stream is the plays main role for the formation of the jet stream that is your tropical easterly jet stream which is a seasonal jet stream blows between Tibet and Eastern Africa coast ये केवल समर सीजन रे आसी थाए मानसून खत्म से भी खत्म and this plays significant role right आको किए आको डिस्कवर करथले कोटेश्वरम किए करथले कोटेश्वरम in 1950s रे कोटेश्वरम डिस्कस करथले this is also called as the modern theory for the formation of monsoon किए कोटेश्वरम so answer is what C now what is the main cause of the jet stream formation देखो सब बेसिक क्वेश्चन नहीं कि आसी बिल्कुल यूपीएससी भलिया वन स्टेटमेंट इज करेक्ट टू स्टेटमेंट इज करेक्ट थ्री इज करेक्ट एमती बिल्कुल भी आनी नहीं है ना यू कैन डू इट राइट ट्राई इट हे परिवो बिल्कुल हे परिवो ट्राई इट Oscar is saying C. Satru C. Pihu C. Okay. देखा था कौन? Which is the main cause of the jet stream formation? Earth rotation? No. Only no. Friction between the troposphere and stratosphere? No. Sharp horizontal temperature gradient and spatially at front and yes, this is the right answer. So yes, right answer तो मैंने दे ही दीचो. So this is the right answer. तो obviously हमें जानते कि jet stream जो formation होता है, why jet stream forms? Because of pressure gradient, because of horizontal pressure gradient, not the vertical pressure gradient. This is horizontal pressure gradient. As that pressure gradient is due to the formation of the front. Which front? साधारणतः हमें कहबा polar front. Right, that is the polar front. Yes, there could be the convections ना आमी जानते कि फेराल सेल हार्डली सेल फेराल सेल पोलार सेल तो समस्त पढ़िथो ट्राइसेलुलर मॉडल समस्त पढ़िथो यूनिसेलुलर मॉडल्स बिल्कुल दरकार नहीं ट्राइसेलुलर मॉडल समस्त पढ़िथो हार्डली सेल फेराल सेल पोलार सेल आ एथरे कोटा कोटा में डायनामिक हेता है कोटा थर्मली इंड्यूस्ड हेता है ताको माने जानिछो त माने सो दिस इज द आंसर इज राइट आंसर बिल्कुल त मन ठीक अछि दिस वन इज द फ्रंट फॉर्मेशन जगु हेता है एंड दैट इज द राइट वन ओके दिस इज द राइट वन चले फिर यस बाकी तमें मन रखो जो पोलार फ्रंट था जो पोलार जेट स्ट्रीम था एठी मु गोटे कथा कहि दिए जो पोलार जेट स्ट्रीम था जेतरो से मियांडर करे सेतरो ताको कोन कहा जे रास्बी वेव कहा जे सेतरो ताको कोन कहा जे रास्बी वेव बोली कहा जाई था चलो फिर नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जेट स्ट्रीम इज आर करेक्ट मन रखो रास्बी वेव्स जोटा तुमको कहली चलो फिर चलो आंसर दियो शत्रुदीप 10B बाकी मैंने ट्राई करा ट्राइट
ओस्कार 1 and 3, अनुभव ए। ओके देखिबा ताले आंसर कोन होउची टिके मु ड्रॉ करके देखै दिए तुमको निजे जानि ही परिबो मते आंसर कहय पड़िबोनी मु देखै दउची तुमको ड्रॉ करके सो दैट तमे निजे आंसर कहबो मते कहय पड़िबो नाही। चल फिर मु ड्रॉ करूची एबे now if this is winter condition, let's say winter condition is going on, right? In winter condition this high pressure would be more active, this polar high pressure will be more active. That means the area of this high pressure which is thermally induced, this high pressure is what? Thermally induced. You have to remember this high pressure is thermally induced and this is very active, this would be very active. Now the jet stream will move like this, the jet stream will move like this, आर एरिया कौन हम बढ़, the area of the jet stream will increase. कहीं because this high pressure would be more strong, this high pressure would be more strong, right? So that means they are coming towards the equator, they are coming towards the equator. So the jet stream will move towards equator in the winter, this is correct. Now in the summer say कोई चीज summer jet stream are more stronger in the summer ना, summer weak है because this high pressure would be weak, this high pressure will be weak and that is why this is not, this would be weak. तो ये कौन है weak है. So option 1 is wrong. If option 1 is wrong, B will be the answer. Yes, so B will be the answer. Yes, so 2 3 would be the answer will be there. ना ये answer तमने बुझी सारी थी वो. So answer is what? B. हाँ ये जो monsoon मु तुमको कही छी आउ टिके पूर्व देखी थे तो एटा ऊपर टिके क्लैरिटी मु कही दिए. There are two jet stream that influence the monsoon. One is easterly jet stream आ पूर्व देखी थी and other is subtropical jet stream or the mid latitude jet stream जाको हमें कही परिबा. तो ये जो subtropical jet stream था से monsoon को भी इन्फ्लुएंस करे प्लस आमे कहबा टेम्पर्ड साइक्लोन को भी इन्फ्लुएंस करी थाए. चलो फिर नेक्स्ट वन, द विंड इज कॉल्ड पाम्पेरो. ये बहुत इजी क्वेश्चन आगु तुम मैंने देखि दियो, एथरे शायद मोर किछि काम दरकार पड़िबोनी, देखि दियो तुम मैंने. ट्राई करो. हे जो ट्राई करो इजी अछि हबो. समस्ते आंसर दियो, समस्ते दियो. जयदेव बी, पीहू बी, समस्ते बी दउछ. देखियो त आंसर कोन. पाम्पर इज अ कोल्ड एयर विंड अर्जेंटीना. पाम्पोस रे देखा जे विंटर रे देखा जे बहुत बढ़िया. आंसर इज बी करेक्ट. राधे राधे. दैट्स ए व्हाट बी इज द आंसर. यस बी इज द आंसर. व्हाट बी इज द आंसर. चलो फिर व्हाट वुड बी द लोकेशन. पाम्पेर रो जदी टिके लोकेशन देखिया पे चाहो छ, मु लोकेशन भी देखि दिए कि वेयर डज इट. लेट्स से दिस वुड बी योर South America and the Pampero is here, Argentina. So here would be Pampero. It's a cold one. It's a what? Cold one, right? It's a cold and flows during winter. Next question. Which of the following is a thunderstorms generating local wind system affecting eastern India during pre-monsoonal
month, a monsoon month. Yes. हाँ, cold means dry habo. Desert आउरी पछकु रही जिवो, ये ग्रासलैंड रे देखा जिवो. It does not affect the Patagonia desert. It would not affect the desert. हाँ, ये desert को affect करिवो नहीं. So जोटा पचारथिलो, so that would not affect the desert. Madhusmita is saying it's A. Which one? Joydev is saying A. Good evening, Afrin is also there. Good evening. Vijay Lakshmi also there. Good evening. हाँ, ये कौन हबो कुआ? Which of the following is the thunderstorm generating local wind? जोटा मु तमनको कहितली, एटा पढ़ा हेइछि, बिल्कुल पढ़ाइछि मु कहितली के. Good evening to all. Afrin also there. Yes, it's a what? काला बैसाखी. The answer would be what? काल बैसाखी मु पढ़ाइतली. अच्छा, मते केही भी गोटे को कि why काला बैसाखी is so dominant in this region? ये भी हमें क्लास रे पढुथले, राइट? मु कहितली कि why this particular region. Let's say if I draw this map of India, right? Now why this region is so dominated by the Kala Vaisakhi? Now this Kala Vaisakhi is dominated in this region, right? In the what? Northern Odisha, Jharkhand, Bihar, Bengal and Assam. Why this region Kala Vaisakhi is dominant? Or why it forms? Why it forms here? Why not other parts? So that will be forms during the pre-monsoonal rainfall ही था. तो ये कोठी थे ओडिशा, बिहार, WB, झारखंड एंड नॉट होल ऑफ ओडिशा. ओडिशा रो चिलिका रू नहीं कि नॉर्थ को, मतलब हमें कहा पूरी ठू नहीं कि मयूरभंज. ह्यूमिडिटी फैक्टर आउ कौन कहितली को? मु कहितली मीटिंग ऑफ टू डिफरेंट एयर मास. वन इज वार्म एयर मास एंड वन वुड बी कूल एयर मास. सो दिस इज व्हाट? मीटिंग ऑफ टू डिफरेंट एयर मासेस. बेंगल टाइम कहते नॉर्थ वेस्टर ए सब तुम मन को कहतरी. हाँ, मनदीप कर क्या पूछ रहे हो? बोल रहे कि हॉटस्पॉट और माग्मा चैम्बर. भाई देखो, हॉटस्पॉट और माग्मा चैम्बर क्या होता है? इनका क्वेश्चन है कि हॉटस्पॉट और माग्मा चैम्बर. Basically, hotspots are there, the hot plums. They forms in the what? Because of some radioactive minerals are there. Hotspots are generally like, for example, the Hawaiian hotspot. But these hotspots are not associated with the plate boundaries. They found in the what? Middles of the plate, because of certain radioactive minerals are there in the mantles. And those regions where is the high concentration of the energy, because of the high concentration of the energy, that magma comes out, and that is like when we what shoot a जैसे कि ग्लास, वैसे कार का जो ग्लास होता है, if you shoot it, they will hold the glass, not break the glass. So this is like the hot spots. This it will hold the plate, not break the. Now comes to the magma chamber. Magma chamber are basically that would be mantles from where the magma is coming, and that is feeding what? Your volcanoes. चलो फिर. Now Santana, this was in news also. This was also in news during the that the dangerous I would say what California forest fire was there. Now I am monitoring. Yes, is it clear everyone? चलो फिर हो गया. Now Santana, this was in news also. This was also news during the that the dangerous I would say what California forest fire was there. Now I am monitoring.
guess. Is it clear everyone? चलो फिर हो गया. Okay, now this one, answer it. तो सांटाना इज ए लोकल विंड कैलिफोर्निया रे देखा जाए जोटा आमे देखिथिले कि जो भयंकर कैलिफोर्निया फॉरेस्ट फायर हिटला that was playing one of the major role because this would be what feeding the fire. This was what feeding the fire. Okay, resound होची. ना एबे हबनी एबे हबनी एबे होची एबे ठीक अछि देखो now there would be no resound. It's clear. Okay, it's clear. Afrin, it's clear now. Everybody is going for the B Santana. They increase the fire hazard due to the hot and dry. Yes, this is the right one. Yes, the right answer is what? Now Santana जदि देखिबो मैप रे मु टिके देखै दिए कि where exactly the Santana happens. मैप टिके देखि देबा हमें ताकि तुमको जाना पड़ी जो कि Santana कोठी देखा जाई था. Let's come to the map of USA and I would say North America. If I draw the map of North America like this, right, this would be North America map and the Santana is here. It blows like this. It what blows like this. Here would be your Santana, right? California region. This is the California region and it would be there. Yes, the answer is B. चलो फिर बहुत बढ़िया. ग्रेट. चलो बहुत सारा क्वेश्चन अछि तम मानक पई. Which of the following cloud is the most commonly associated with the thunderstorms and heavy rainfall? बहुत सारा क्वेश्चन अछि. Try it. बहुत सारा क्वेश्चन नहीं कि आसी तम मानक पई. Madhusmita LC, समझते LC, C, everybody is going for the C. Cumulonimbus clouds, बहुत बढ़िया. The clouds looks like what? Yes, the answer is what? Cumulonimbus clouds. So answer would be what? Cumulonimbus clouds. So what would be the answer? Yes, the answer would be cumulonimbus clouds. How the clouds looks like? The cloud would be vertical thickness. It would be what? It will have vertical thickness. It will have what? Vertical thickness of the clouds. The clouds would be dense, right? It would be like verticals. The cloud would be looks like vertical. It would be dense. It would be dark and high thickness. The bottom would be looking like completely dark. So this is how the thickness of the clouds will be there. Cumulonimbus cloud that looks like a dome shape. It would be dome or vertical like the pillar shape. Either it will looks like this dome shape or it would be looks like this. So this is cumulonimbus clouds. So answer would be what? Now why then cumulonimbus clouds? जदि तुमको एक था क्वेश्चन पचरा जिवो अच्छा ये cumulonimbus रे काहे की हुए? Because of circulation, vertical circulation of what? That is the charged particles. That is what? Positive and negative charged particles. There would be, I would say what? Current. A current will started to flow within the cloud. Within the cloud. What was that mark on message box? कोटा कहलो? I don't know. चलो फिर next. Which of the following statements is are correct about the nimbus cloud? Cloud रो आसुची. एबे cloud question ना? Now we are having cloud question.
So that is Joydev's marks. He is like the king here. Acha देखिए. So which of the following statement is are correct about the nimbus cloud? Nimbus clouds are what? They are dense dark clouds in color. They brings continuous precipitation, nimbus clouds. They are found only in the tropical region, nimbus clouds. Which of the following is correct? All are correct. Nimbus clouds are found only in tropical region, not in equator, not in middle latitude. ओके देखिबा आंसर कोन होउची ताले बाकी माने ट्राई करो. निम्बस क्लाउड्स तो हमें जानी छे. निम्बस व्हाट? रेन बियरिंग क्लाउड. दे आर व्हाट? रेन बियरिंग क्लाउड. देखियो ताले आंसर कोन होउची. सो आंसर व्हाट हियर? ए. आंसर इज व्हाट? ए. तो ओनली केमती देखा जिवो कि ओनली ट्रॉपिकल रीजन. मु तुमको कहथिला ओनली ट्रॉपिकल रीजन केमती हेबो. राइट. लिटिल बिट टिके दिमाग लगेबो कि निम्बस क्लाउड खाली इक्वेटर रे देखा जीवनी, ट्रॉपिक रे सब ट्रॉपिक कोठी देखा जीवन खाली हेड देखा जीवो. बस एते भी मतलब एक्सट्रीम हबार नहीं कि कहीं की देखा जीवनी. जदि निम्बस क्लाउड होउनी ब्रिटिश रे कोन हबनी. जदि ब्रिटिश रे निम्बस क्लाउड न हबो, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट रे बा लरिशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट रे रेनफॉल केमती होउची. राइट. सो दैट वुड बी देयर. सो आंसर वुड बी ए. एबे क्लाउड क्वेश्चन चलची. नेक्स्ट वन. So this is what? Now it's having pressure belt to question start. Cloud वाला question खत्म होला. अबे pressure belt to question start. चलो 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 नेक्स्ट. ट्राई इट. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. Is going great. बहुत बढ़िया. देखो the polar high pressure belt is characterized by what? Rising air mass, low humidity and high rainfall, descending cold air mass and the divergence at the surface. बहुत बढ़िया. देखो 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 फटाफट 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 जहार डाउट थी मते पचारो. डाउट विल बी क्लियर. नो डाउट. डाउट को क्लियर करबा सेथर किछि भी असुविधा नहीं है ना, with short period of times. So let's say this would be your polar region. So here is what? High pressure. So upper atmosphere will have the low pressure. The air will descend here. The air will descend here. The high pressure. ताले एठी कोन हबो? High pressure हबो. देखियो आंसर को. Yes, answer. Madhusmita is going for the C. Hira is going for C. Satru is C. Pihu is C. Sanjeev C. Kalam is going for the C. Everybody is going for the C. C. Yes, the C is the right answer. Air tight कौन करुची? Descend करुची. This is what? Severe cold air descend करुची, and this is also called as polar vortex. आपको कौन कहा जाए? Polar vortex. This is what? Polar vortex. This one is what? Polar vortex. This one is what? Polar vortex. And this polar vortex is a trapped severe cold air mass due to the jet stream which is surrounding it. Okay. Now this is, that means high pressure means what? It would be a divergence. Low pressure means convergence, and that is why here would be air descent, no ascent. There would be in the polar region, there would be no low humidity. As it is low humidity, high rainfall, right? Rainfall no, precipitation, rising air no, descending air. Convergence trade wind no, trade wind convergence polar equal to देखा जो से 80 देखा जो, and that is why answer would be C. So answer is what? C. Question number 17. Question number 17. What is the significance of the polar low pressure belt in the global wind circulation? What is the significance of subpolar low pressure in the global wind circulation? Try करो.
Hira is going for the C. Everybody is going for the C. It allows the westerlies to rise up. The cyclone forms which one? Which cyclone will forms? The temperate cyclone will forms. Okay, let it see. Rest other answer. Afrin is going for C. बाकी मन को देखिबा कोन आसी. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. यस यस, बहुत बढ़िया. राइट, चलो फिर नेक्स्ट को जीवा. आमे ताले ये बुझा पड़जो समस्त को. बिकॉज आमे कहबा जेतला आमे कहउचे पोलार सपोलार लो प्रेशर कोन मीटिंग ऑफ द ईस्टर्ली एंड वेस्टर्ली. ईस्टर्ली इज कमिंग फ्रॉम द, जदि मु एठी तमन को देखै देबी फटाफट, तमन तो जानि थिबो जति है समस्त तो जानिचो है आंसर दउचो माने तो पक्का जानि थिबो तमने. सो दैट मीन्स सिंपल इट वुड बी व्हाट? द कोल्ड एयर मास इज कमिंग फ्रॉम द ईस्टर्ली and the warm air mass westerly जाउची. ये west टू जाउची. So there would be meeting and the meeting रे सबले warm air mass टा ऊपर को जीवो and that is why the what westerly will rise. Kinetic कोन formation हबो? That will lead to the front formation. In the front formation the cold air being stable, being weight, it will descend, it will sink and the warm will rise and that is why it would be answer right, correct answer. चलो फिर. During the northern hemisphere summer the thermal equator shift would be what? Easterly coming from the polar region, that would be severe cold. That would be severe cold because of the polar high pressure, and the high pressures are the reason of the origin of the wind, because it needs stable condition. Its atmospheric stability is needed. चलो next. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. During the northern hemisphere summer the thermal equator shift. Anubhav, Hira is going for B. Afrin is going for C. 18 is Madhusmita is going for B. समस्ते B पे जाउछे, B पे जाउछे. देखिबा नेक्स्ट माने बाकी माने भी C किए देला. तो obviously it will northward move करिवो ना. northern hemisphere जदि summer अछि then the thermal equator will move towards what? northern hemisphere. because मु कहितली कि that means the doldrum, or I would say that ITCZ will move towards the north. If the sun would be in the southern hemisphere then it will move towards the south. So that means it would be what? It would be vorticity of the sun. Okay, so it would be B. The B will be the answer. What? The B will be the right answer, will be the B. Okay, so right answer will be B. So that is southern hemisphere, the thermal equator will move towards the pressure belt will shift towards the north because of the apparent movement of the sun. Because of the apparent movement of the sun, that is why it will move. Next, what would be the next? The harsh latitudes are associated with which of the following? Amarjit Satpathy also joining me. बहुत बढ़िया. Now next question, the harsh latitudes are associated with which of the following? Some of the points is given. Point 1, the high pressure, this would be there, the harsh latitude. The light surface wind will be there. There is oceanic calm zone. There is heavy precipitations. Now which of the following are the correct? Try it. देखिए. This is a great question. This one is a conceptual question, so you need to have clarity. Improve it. Try it. बाकी समस्त भी ट्राई करो. एमते नहीं कि जणे ही ट्राई करबो. बाकी माने को जो माने भी देखुछो all are comments करो. Let's say this will be your equator and this is your subtropic, right? ये गला तमरो subtropic अछि 23.5 नेली. So here wind will descend. एठी air कोन करो descend करो. That means this is high pressure. High pressure equal to calm condition, equal to what? Atmospheric stability. If atmospheric stability will be there, there would be no rainfall. ध्यान से मन रखिबो. For the rainfall we need instability. What?
instability. What instability? Atmospheric instability. Stability एठी थाए atmospheric. This region high pressure means what? जते बड़े भी high pressure लिखा हो जानिबो atmospheric stability. Stability अर्थात air would not ascend. आउ जदि air टा ascend न करिबो rainfall हबो नै. So 4 got wrong, 4 got wrong, 4 got wrong. Now 1 2 3 only, 1 to 4 हबो नै. 4 एठी भी wrong हेजबो. So answer would be A. So that would be A. आउ किछि ऑप्शन नाही. So that means it would be atmospheric high pressure. High pressure तो already हमें जानि छे. लाइट विंड रहइबो काई ना एठी तुमको कहबे सर एठी लाइट विंड काहे की बिकॉज़ लो प्रेशर हेले सिना विंड अधिक जेमति कहंती बे ऑफ बेंगल रे लो प्रेशर होई छि अधिक जोरे पवन हबो वर्षा हबो एठी त हाई प्रेशर तार उल्टाटा हबो सेथि पे एठी लाइट रहइबो नो रेनफॉल रहइबो दिस वुड बी काम जोन इज इट फाइन टू ऑल करेक्ट आंसर देखि देला आरो why are the doldrums generally calm and the wind lays at the surface? ट्राई करे देखा आगु Next question, why the doldrums are generally calm and wind lays at the surface? Wind surface रे बेसी किसी न थाए Afrin is going for intense hitting. Afrin कोची intense कौन आइटा देची वो doldrums काहे की काम ही थाए अच्छा ठीक है देखो से लिखाई छि स्ट्रांग कोरिलेस फोर्स देखो डोल्ड्रम रे कोरिलेस फोर्स तम माने देखो मु तो जाननी subsiding of cool air mass सेटा हम देखो परे arousal rises vertical to the intensity the presence of strong jet stream चलो फिर देखबा मधुस्मिता इज सेइंग स्ट्रांग ए कोची मधुस्मिता कोची ए के कोची सी के कोची कोन मेजर सो आंसर वुड बी सी हबो आंसर अरे डोल्ड्रम अर्थात कौन डोल्ड्रम्स मतलब इक्वेटर आम कह 0 to 5 डिग्री 0 to 5 डिग्री ऑफ द इक्वेटर जोन एटा था इंटेंस हीटिंग वर्ष सारा सन रो वर्टिकल सन रेज दैट विल हैव इंटेंस हीटिंग दैट मींस राइजिंग ऑफ द एयर कंटीन्यूअस राइजिंग ऑफ एयर देयर वुड बी नो सब्सिडेंस ऑफ कोल्ड एयर कोठु आसीबो देयर वुड नो कोरिलेस इफेक्ट एटी जीरो थाए कोरिलेस इफेक्ट डोल्ड्रम रे जीरो थाए subsidence of cold air बिल्कुल हबनी there is no subsidence there would be only ascending of warm air mass that is also wrong ये जो जेट स्ट्रीम एठी न थाए बस देयर वुड बी नो जेट स्ट्रीम सो सी इज द आंसर सी इज द आंसर सी इज द करेक्ट आंसर एबे बुझा पड़थो तमन को बुझा पड़जी बाकी मन को अरे अरे क्वेश्चन ठीक मजा आसुची तमन को पूरा हां मजा आसु कि नहीं मतलब मजे आ रहे हैं ना पूरा क्वेश्चन ठीक ठाक है ना पूरा परफेक्ट चलो फिर एंड दिस वुड बी right warm up for the OCS prelims and the other state PCS prelims those who are watching me this is the warm up session you have to warm up like this by doing the MCQs you can warm up and exercise your brains how much you can recall that is the time this is the times to strengthen it chalo fir next which of the following statements about southwest monsoon is are correct which of the following statements about southwest monsoon is are correct thank you everyone Sanjeev Madhusmita all you chalo 10 more questions is there move on great so it's देखिए आंसर कौन अछि which of the following statements तो आंसर तुम माने किया दछो पीहू कहउची आंसर डी मधुस्मिता ए कलम इज ए हीरा इज ए अनुभव इज ए शत्रु इज ए मेजॉरिटी ए जाइछो जगन स्वाई इज बी ओस्कार 2 and 3 ओके देखिबा कोन अछि
अच्छा से कौन कहूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अब साउथ वेस्ट मानसून तो ओके इट एंटर्स इंडिया थ्रू बोथ अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल दिस इज करेक्ट branches the Arabian Sea branches causes more rainfalls over the western Ghat bilkul correct it is about dry wind system this is not dry wind system ye dry wind no eta gote moist ta ତେଣୁ it would be 1 and 2 ହବ ବାକି ତମାନେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛ majority A ଦେଇଛ ତ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ आंसर it's a dry not it's not dry it's a dry wind ନୁହଁ it's a A it's a dry wind ନୁହଁ ओस्कार है ना इट्स नॉट ड्राई विंड नुह एटा तो मॉइस्ट एटा ना ड्राई हेले वर्षा केमती हबो जदि ता पाखरे मॉइस्चर नाही ह्यूमिडिटी नाही वर्षा केमती हबो से सेति पे ये ड्राई हबो नाही दैट वुड बी ह्यूमिड चलो नेक्स्ट हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट आसा बहुत बढ़िया क्वेश्चन मानसून रो पुणी Which of the following correctly explains monsoon trough? A jet streams corridor over the Himalaya. This is very important. Area of subsiding airs between Himalaya and equator. Now low pressure that shifts north and south with monsoon. Low pressure zone that shifts north and south with monsoon. And oceanic reach of high pressure. So C is majority of you going is for the C देखिबा तले देखिबा कोन होची चलो फिर देखिबा yes majority is going for the C right so is a what right बहुत बढ़िया आंसर चलो जीवा फिर एटा बुझा पड़ो समस्त को एसे लो प्रेशर जोटा कि शिफ्ट करो नॉर्थ एंड साउथ मॉनसून एंड ट्रो कोन केतबे सदर्न हेमिस्फीयर जाउची केतबे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को जाउची दिस इज द विंड पैटर्न मॉनसून इज सिंपल इट्स अबाउट रिवर्सल ऑफ विंड पैटर्न सिंपल एसोसिएटेड विद द आईटीसीजेड इट इज एसोसिएटेड विद द secondary wind pattern which is modified version of the primary wind pattern southwest monsoon is what simple the modification of the trade wind due to the coriolis force due to what coriolis force that will be there now next question which of the following factor influence the intensity and timing of Indian monsoon से कौन कहछि देखा इन्फ्लुएंस द इंटेंसिटी एंड टाइमिंग ऑफ इंडियन मानसून दिस इज वेरी इंपोर्टेंट मानसून रु मु देखो केतेटा क्वेश्चन नै छि तुमको तीन चारटा क्वेश्चन मु मानसून रु देखै देइ सो दैट तुमको कोन हबो के एटलीस्ट आमे कहबा इन्फ्लुएंस इंटेंसिटी एंड टाइमिंग तो मानसून रु तीन चारटा क्वेश्चन डिस्कस कले मानसून हे गेला तो एमती नै कि मानसून रु 10टा क्वेश्चन डिस्कस करिवि चलो नेक्स्ट देखो which of the following influence intensity and timing of the monsoon मु समस्त कमेंट देखुची बिल्कुल कमेंट देखुची कमल इज सी जगदेश बी ओस्कार इज गोइंग फॉर 1 to 3 पीयू इज सी बाकी समस्त को देखुची मॉनिटर करूची yes which of the following influence the intensity of the timing of the Indian monsoon okay देखिवा देखो चलो 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 तो मेजॉरिटी कौन कहूची ये कौन जाउछ किछि लोक सी देछि किछि ऑल तो ऑल ही हबो इट वुड बी ऑल सो गो फॉर द अप्लाइड फॉर्म इट वुड बी ऑल इट वुड बी व्हाट ऑल मींस सी 1 2 3 4 चलो इट वुड बी सी 1 2 3 4 सब जक हबो ऑल इट वुड बी ऑल टाइबेटन प्लेटू देखो ये न हले तमर जेट स्ट्रीम फॉर्मेशन हबनी टाइबेटन प्लेटू न हले कोन ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम फॉर्मेशन हबनी और ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम फॉर्मेशन न हले मानसून हबो नै सो दैट इज व्हाई दैट इज द रोल ऑफ टाइबेटन प्लेटू हमें देखिथिली मु कहितली कोन कोटेश्वरम कथा कहितली मु आगुरु कहितली कोटेश्वरम कथा जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम दैट इज वेरी इंपोर्टेंट ना आईटीसी जेट जदी इंडिया ऊपर को न आसीबा रेनफॉल केमती हबो तो आईटीसी जेट लो प्रेशर आसीबा दरकार तो ये भी इंपोर्टेंट लालिना एलिना तो मानसून को इन्फ्लुएंस करे तो आकु भी मु छाडी परिबिनी तो तीन तो मो आंसर रे रहिबा दरकार तीन एठी होची तीन एठी होची तीन एठी होची ताले ए तो हबो नै तीन एलिनो लालिना तो मानसून को इन्फ्लुएंस करे ना तो तीन जदी ए रे नहीं तो ए तो हबार चांस ही नहीं इधर हबो बी हबो नले सी हबो नले डी हबो अच्छा तापरे टाइबेट तो हमें देखितले ताले 1 and 3 कोठी होची एठी होची ये भी कोठी गला तो बस दैट इज हाउ यू हैव टू डू द क्वेश्चन
सोमालियन जेट देखो ये जो एक मिनट हाँ सोमालियन जेट कौन करे इफ सोमालियन जेट मु देखे दउछि एठी है ना एक मिनट देखे दउछि ध्यान से सुनो द विंड मूव्स हियर लाइक दिस देन इट विल मूव लाइक दिस तो एठी जो एयर टा एमती जो विंड टा एमती मूव करूची सोमालिया कोस्ट रे इफ दिस इज कॉल्ड एज द ये लो रे ग्राउंड जस्ट एबव द ग्राउंड एटा हला सोमालिया कोस्ट तेणु एठी कहा जाको सोमालियन जेट कहीं कहजे बिकॉज ऑफ द स्पीड इज मोर कहीं की स्पीड मोर बिकॉज ऑफ मोर प्रेशर ग्रेडियंट साउदर्न हेमिस्फीयर विल बी हाई प्रेशर this would be what high pressure your India is what low pressure कहना इंडिया रे लो प्रेशर रहली सिना हाई प्रेशर लो प्रेशर को एयर जबो बट इक्वेटर अछि तो एयर वुड बी डिफ्लेक्ट एंड इट विल मूव्स लाइक दिस तो जेथरा कोन है जबो कोरियलिस फोर्स अछि इट वुड बी डिफ्लेक्टेड इट विल मूव लाइक दिस right so that is why here there would be because of that geographical condition and the high pressure gradient the wind speed increases and सेथिबेटी सोमालिया कोस्ट को सोमालियन जेट को जे ये सोमालियन जेट जेते स्ट्रांग हबो तमरो मालाबार कोस्ट को सेते विंड अधिक आसीबो that is why we need a strong Somalian jet clear everyone चलो फिर and next questions explain the break monsoonal break कोन हेजबो भी बुझा पड़िबो which of the following explain monsoon break break अर्थात कोन monsoon break हे गेला मतलब चालूनी माने कोन वर्षा होउनी किछि दिन पई से 5 दिन हे परे 6 दिन हे परे 7 दिन हे परे so that is a period of the dry साधारणतः 7 रु 15 दिन हे थाए ए जो monsoonal break साधारणतः 7 रु 15 दिन हे थाए मन रखिबो केते हे थाए 7 रु 15 तो राइट आंसर इज सी monsoonal break हेले कोन हबो सपोज भाबो चासो काम स्टार्ट हे जाईछि but suddenly the monsoon breaks happens so drought condition will prevail right last 5 questions the primary driving force behind the global atmospheric circulation is what बहुत बढ़िया चलो 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 make it great growing great बहुत बढ़िया everybody is going for b किंतु ये कमल देछि कण कमल सी देछि बाकी मेजॉरिटी बी देखो आंसर कोन तो ये आंसर वुड बी बी हबो सी कहीं देलो सी कहीं की वाई सी दिस इज बी मतलब ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन अर्थ रोटेशन जोगु कहीं की हबो अर्थ रोटेशन सहित किछि न ऑन इवन हीट डिस्ट्रीब्यूशन जोगु हबो because of what on even सब बळे मन रखो when you are solving the MCQ you have to go for the moderate one and that is technically sound and more comprehensive it would be what so yes answer would be B so answer would be B कारण तुम इक्वेटर अधिक हीटिंग अछि इक्वेटर जदी हीटिंग अधिक ही न थांता तले हीट टा पोलर को ट्रांसफर हबो की हबोनी सो बिकॉज ऑफ ऑन इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस 26 feral cell 26 feral cell the rising air at the equator and sink 30 degree feral cell the rising air at 60 degree and sinks at 30 degree
The sinking air at poles and rising 60 degree. Uniform horizontal motion between equator and pole. ट्राई कर देख मुझे ड्र करके देखे दूसरी एबे तमे आंसर दे परिबो the air will rise, it will move, it will descend and comes, so this would be there. Air will rise, it will move, descend, it will move, descend, so this would be circulation. 1 2 3, here would be divergence, here would be divergence, so these are the three cells. So Hadley cell, feral cell, polar cell. Okay, फास्ट से कहूँ राइजिंग एयर एट इक्वेटर एंड सिंक्स. देखो फेराल सेल इक्वेटर सहित किसी नवा तो ना तो ये तो कैंसल हो ना. राइजिंग एयर एट 60 डिग्री एटा होची हमर 60 डिग्री एठी एयर राइज कला. अच्छा ठीक अच्छे. सिंक 30 डिग्री एठी सिंक करबो. ठीक अच्छे ये करेक्ट. सिंकिंग एयर एट पोल राइजिंग 60 डिग्री ना ये भी कोठी ना कोठी ठीक अच्छे. बट आम एटा पोलार सेल हो. सो बट एटा कौन हो तुम पोलार सेल हो. सो दिस इज नॉट करेक्ट. सो बी वुड बी द राइट आंसर. देखिबा केते जण बी देइचो. बी देइचो बी देइचो बी देइचो बी मैक्सिमम बी बी बी. यस बहुत बढ़िया. बी इज द आंसर. टिके ध्यान से पढ़ो ना यहाँ तुमको लगे कौन कहल कि ये लिखाई ना सिंकिंग ये जोटा तो फास्ट लिखी एटा तो हेनी. अच्छा ये जो देखो सिंकिंग एट पोल तुमको लगे पोल कहले तो हाँ ये तो राइज कर पोल रे पोलार सेल होटा हार्डली सेल हम फेराल सेल हम. लास्ट 3टा क्वेश्चन. द मैग्नीट्यूड ऑफ द कोरियोलिस फोर्स डिपेंड्स ऑन व्हाट? लैटिट्यूड, स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, altitude, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट. ओके देखिए एथर कौन कहूँ से कौच लैटिट्यूड कोरियोलिस फोर्स कहा पर डिपेंड करे. चलो फिर देखा ट्राई कर. लैटिट्यूड जना पड़ूनी. लैटिट्यूड जना पड़ूनी. अच्छा मत कह स्पीड तो बिल्कुल हम 2 तो करेक्ट अच्छी. 2 ताले ये अच्छी 2 ठीक अच्छे. डायरेक्शन अच्छा देन रहा तुम लैटिट्यूड अच्छी अल्टीट्यूड अच्छी. भाई लैटिट्यूड भी नियो अल्टीट्यूड भी नियो नहीं जाओ ना कौन असुविधा होची. अल्टीट्यूड 3 तो रहिबो 2 तो अच्छी 3 अच्छी 2 अच्छी 3 अच्छी 2 अच्छी तो कौन असुविधा हो जाउची. देन गो फॉर ऑल. सी ओके 1 3 इज नॉट करेक्ट. अल्टीट्यूड 1 मिनट 3टा कौन हो गला. एटा कौन गलत हो गला आंसर. 1 मिनट देखा आंसर कौन गलत हो गला. एटा मोर से कहूँ मैग्नीट्यूड ऑफ कोरियोलिस फोर्स डिपेंड ऑन लैटिट्यूड ठीक अच्छी. स्पीड ठीक अच्छी. अल्टीट्यूड टा डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ये तो ठीक सी नेला ना कि 1 2 4 3टा कौन अल्टीट्यूड टा को नहीं. अल्टीट्यूड रे बढ़ले फ्रिक्शन कमिबो. कौन गलत हो गला आंसर कौन हो गला. तो अल्टीट्यूड रे जदि हम ऊपर को जाउचे फ्रिक्शन कमिबो ना. फ्रिक्शन कमिले तो स्पीड बढ़िबो. स्पीड बढ़िले कोरियोलिस फोर्स इंपैक्ट अधिक हम से मु कहली ही जीवो ना. ध्यान से सुनो यहाँ अल्टीट्यूड केमिति हबो सर अनुभव पचारुची. मु टिके गोटे मिनिट मु टिके कहूँ टिके 1 मिनिट दियो मत टाइम 1 मिनिट. हाँ यहाँ देख एक्चुअली कहीं मतलब हाँ देख भूल मोर यहाँ मत लगे कि हाँ यहाँ ऑल हो
कहीं से अल्टीट्यूड नौनी माने टिके मु देखि दे मु कहीं के अल्टीट्यूड मु कहीं कहूची ऑल हबो आंसर व्हाई आई एम सेइंग कि ऑल वुड बी आंसर कारण जेतर अल्टीट्यूड रे मु ऊपर को जाउचे द फ्रिक्शन वुड बी लेस ताले फ्रिक्शन टा कोन हिजबो तमरो कमी कमी जीवो फ्रिक्शन जेतल कमिबो स्पीड बढ़िबो स्पीड बढ़िले डिफ्लेक्शन बढ़िबो कोरियलिस फोर्स अधिक अफेक्ट करिवो सेथि पई मु कहली आ आमे जेतर लैटिट्यूड रे बढ़ुचे पोलार को जाउचे ऑब्वियसली कोरियलिस फोर्स अधिक हबो बट अल्टीट्यूड एथि पई मु कहली काना हमरो जो माउंटेन प्लेन प्लेटू इस फ्रिक्शन करूची जेतर विंड टा फ्रिक्शन हबो विंड टा जेतर पूरा ऊपर को पळौची जेंति गुटे एरोप्लेन फास्ट मूव करिवो फ्रिक्शन हबोनी तो जेतर फास्ट मूवमेंट जेते करिवो सेते कोरियलिस फोर्स इंपैक्ट पकेबो तो डिफ्लेक्शन अधिक हबो मुली ओके चलो सेटा मु सेथि पे ताको कनेक्ट करथली ओके तो चलो सो अल्टीट्यूड इज नॉट द पॉइंट सो रेस्ट इज द आंसर इज सी तो गोटे आंसर हमरो भूल हैला मतलब चलो विदाउट कोरियलिस इफेक्ट द ट्रेड विंड वुड ब्लो व्हाट सेटा देखो एबे डिफरेंट 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 परसेप्शन रो आंसर हे परियो हैला मु तुमको कहि देली यदि आंसर एठी मतलब सी दिया हितला दैट इज ए डिफरेंट थिंग बट मु तुमको लॉजिक कहि देली चलो नेक्स्ट ओके डन चलो तम मानकर एते होची मोर नले गोटे हबो हैला आउ चलो without Coriolis force effect trade wind would have what trade wind कौन हबो directly from subtropical high pressure to equator yes answer would be D बहुत बढ़िया आंसर would be what तो कारण कोरियलिस फोर्स नहीं तो ताको डिफ्लेक्ट किए करिवो केई तो करिवार नहीं तो से डायरेक्ट आसी इक्वेटर पहुंची जो नो डिफ्लेक्शन जदी हैला तो डायरेक्ट आसी पहुंची जिवो आ कोन राइट जेमति कि एठी देखो तमे फॉर एग्जांपल व्हाट विल हैपेंस बट सेटा डिपेंड करे ओपीएससी यूपीएससी ऊपर हैला सेमिति भूल हुए नी डन चलो फिर लेट्स से एटा इक्वेटर हैला एटा सब ट्रॉपिक तो जदी तमर एयर विल कम्स लाइक डायरेक्टली एमती आसी जिवो केना कोरियलिस फोर्स रोले से एमती डिफ्लेक्ट हे जाई थांता जेते कोरियलिस फोर्स नै से डायरेक्ट एमती आसी जिवो सो आंसर डी इज द करेक्ट अदरवाइज एमती डिफ्लेक्ट हे जिवो एक एमती हे जिवो काना में पढितले कोन राइट को डिफ्लेक्ट हबो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर राइट को साउदर्न हेमिस्फीयर लेफ्ट को चलो next and the last two question which of the following statement is correct regarding the land breach easy question which of the following statement is correct regarding the sea breeze it occurs only during the monsoon na bilkul no khali kai monsoon rabo to barsa sara ai thai it bring moisture laden wind from the ocean ठीक अछि it blows from land to sea during the night रे कोन कहछि it blows from land to sea during the night it caused by earth rotation ना ये तो थर्मल ग्रेडियंट जो होई था ना बिकॉज ऑफ व्हाट थर्मल ग्रेडियंट सो ये तो थर्मल ग्रेडियंट जो हुए तो ये कैंसिल हो जिवो ये कैंसिल हो जिवो इट ब्रिंग्स मॉइस्चर लैडेन विंड फ्रॉम द ओशन is correct को तमे but C is more appropriate it blows from से कोई ची land breeze ना तो एटा त moisture laden ता sea breeze हे जबो ओके 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 B is wrong कना एटा कोन हे जबो B ता तो wrong हे जबो because एटा तो sea breeze हे जबो एक मिनट yes so this would be wrong only नो monsoon नो एटा सबु बेले चलथिबो ना एटा कोन हे जबो sea breeze हे जबो से तो कोइ लैंड ब्रिज
राइट नाउ रही एटा आमे देखिबा ये ड्यूरिंग नाइट एटा करेक्ट दिस वन इज द करेक्ट सो सी इज द करेक्ट आंसर सी इज करेक्ट आंसर last question in the July the isotherms in the northern hemisphere last two questions sorry eta last nu apre au dita question achi in the July the isotherms in the northern hemisphere bent towards or bent northernwards primarily because of what so कही in July अर्थात summer the isotherm in the northern hemisphere bends northward को जाए primarily कौन पाई in the July isotherm in the northern hemisphere bent northward primarily because of what try करो so majority is going for the C obviously C will be answer but एक मिनट मु टिके एठी टिके क्लियर कर दिए मु टिके एठी क्लियर कर दिए ये जो तमरो एटा टिके क्लियर हे जाओ नहले एठी आंसर भूल भी हेई पारे केमिति सुनो एठी टिके में एटा मु टिके क्लियर कर दे नहले तमन को एठी चैलेंजेस आसी पारे अच्छा एठी जो लिखा है ना इन जुलाई आइसोथर्म्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर नॉर्थवर्ड बट सेठी बिल्कुल भी कुआ हेनी कि एटा लैंड की वाटर रे एटा एटा कुआ हिची कि सेंटेंस रे देखो से कही नाहंती कि सेथि पे एठी गोटे मु टिके कंफ्यूजन रे पढिली कोन पई कि एथरे बिल्कुल भी लिखा है नहीं कि आइसोथर्म्स ता लैंड रे ना सी रे सेटा कुआ हेनी जदि से कहितांता लैंड वाटर देन इट वुड हैव मूव्ड टुवर्ड्स द इक्वेटर जदि लैंड कहबो देन इट वुड बी मूव्स टुवर्ड्स द व्हाट टुवर्ड्स द नॉर्थवर्ड जदि हमें सपोज भाबो एठी मु नॉर्थ अमेरिका मैप ड्रॉ कली हैला नॉर्थ अमेरिका मैप मु ड्रॉ कली ना ओवर कॉन्टिनेंट इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्थ किंतु वाटर रहले ये इक्वेटर आडे आसीबो सेथि पई एठी क्लियरिटी नाही सेंटेंस रे बट जा भी एटा अप्रोप्रिएट आंसर होची आ किछि नाही बट एटा गुटे के ध्यान से दबो ध्यान रखिबो नले गलत हे जो पुनी एटा वाटर की लैंड ध्यान से नबो ओके बट ताकू टिके नबो नले गलत हे जबो which of the following best explain the difference between isotherms over the ocean and land चलो 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 which of the following is the best explain the difference between the isotherms over the ocean and land the ocean absorbs less heat ocean retains heat longer than the land ocean are affected by gravity land emits more infrared radiation which of the following best explains of the difference between isotherm over the ocean and land answer देखो answer is Hira is B Afrin is B Kamal Kant is B Anubhav B that means Madhusmita everyone is going for the B both बढ़िया because of high specific heat yes the answer would be what high specific heat the answer would be high specific heat answer would be what high specific heat because of what simple high specific heat because of what high specific heat water is having high specific heat that is why longer time pai ba long समय pai heat को absorb कर किंतु land रहउछि low specific heat ए कथा हम जानि छे सेत में land जल्दी गरम हबो जल्दी ठंडा भी जइबो किंतु हम so that is why yes the answer would be B is the correct answer
तो ये थिला लेसन राइट दिस वाज द आज सेशन पूरा बहुत बढ़िया सेशन थिला एंड थैंक यू एवरीवन फॉर योर पार्टिसिपेशंस like it, comment it, share it as much as possible. The lesson by me. Thank you everyone. With this I will end the session and thank you to all. Have a good day to all.